شعیب کیا آپ بھی سردیوں کی شاموں میں کوئی غزل لکھتے ہیں, کوئی شاعری پڑھتے ہیں, کسی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ عموماً جب اداسی والا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور کہتے ہیں بڑا اداس فیل کریں, کچھ شاعری اپلوڈ کر دیتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں, کسی کو سنا دیتے ہیں, تو وہ سردیوں کے شاموں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. نہیں, آرام سے چائے پئیں, کافی پئیں, ٹائم اچھا گزاریں فیملی کے ساتھ. کیوں آپ نے سیڈ ہونا ہے؟ یہ تو ویسے آپ کہہ رہے ہیں نا, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مطلب سردیوں کا ان پہ امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے ان کے اوپر ڈپریشن طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایسی کیفیت ان کو آ رہی ہوتی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے. جی ایک ٹرم ہے یہ جو کہا جاتا ہے, اس کو ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھیں گے. اچھا, ہمیں پہلی دفعہ پتہ لگا کہ یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے, اور ہم نے کیونکہ کبھی ہم بیماری کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں. بیسیکلی سیزنل افیکٹڈ ڈس آرڈر ہے. یہ ہے کیا اور کس طرح سے اس کو کیٹر کیا جا سکتا ہے, ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر روبیہ عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. I'm good, thank you جی. ڈاکٹر صاحبہ, thank you for introducing this term. First of all, یہ کیا ہے یہ seasonal affective disorder یعنی sad? Yes, basically yes. So what happens is that میرے سے جب انہوں نے پوچھا نا کہ winter related کوئی topic بتائیں, so I was really interested to know that that you guys had no clue about this one. کیونکہ respiratory ہر ایک سناتا ہے آ کے, asthmatics, we were just talking about pollution, which are all real. Let's not forget them. But another one that's really neglected اور جو almost step child ہے medicine کا, which is our mental health. So mental health, we in Pakistan especially ignore it. So seasonal affective disorder is a real term which is given to people who feel depressed in winter times. Okay. So autumn and winter times, جب دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, سورج کم ہو جاتا ہے, they generally tend to feel really low in their mood, they lack in energy, they crave high carbohydrate food. So now you have an excuse why you're eating high carb foods in winters. That is the reason. So this is actually our body going through certain changes, certain hormonal chemical changes جو ہمیں یہ سارا کچھ کراتی ہیں. آپ کی باڈی کو ریکوائرڈ ہے. اچھا ویسے کالز بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں, اور اگر آپ کی سردیوں کی شامیں بھی اس طرح گزر رہی ہیں جیسے سبین نے بتایا تو ہمیں کال کیجئے. آپ بتائیں کہ اگر ٹھنڈ ہوئی ہے ذرا اس کا ایک باڈی پہ امپیکٹ ہے, ایک تو کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے, یہ اندر کون سی چینجز آتی ہیں ہارمونل جس کی وجہ سے یہ امپیکٹ آتا ہے؟ So there are actually two different chemicals that are responsible for this. ایک ہمارا میلاٹونن ہے. So میلاٹونن آج کل بہت پاپولر ہے, and I don't want to use this platform to promote it by any means. لیکن بیسیکلی سیڈ میں یہ ہوتا ہے, اور ونٹرز اور جب سورج جلدی ڈھلنا شروع ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میلاٹونن لیولز جو ہیں they basically start going, so this is a hormone that causes you to sleep. تو رات کو جب آپ سونے لگتے ہیں تو آپ کا ہارمون کا لیول زیادہ ہوتا ہے, آپ کو اچھی سی نیند آتی ہے, آپ سو جاتے ہیں. بٹ اف یور لیولز گیٹ ڈاؤن لو, جب ڈپرائیو ہو جائیں تو دیٹ ول ایکچولی کاز یو ٹو فیل ریسٹلیس, اور سارا دن آپ ڈوپی ڈراؤزی رہو گے, عجیب سے رہو گے. اچھا ریورس میں ونٹرز میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے لیول زیادہ ہائی ہو رہے ہیں بیکاز سورج ڈھل گیا نا 3 بجے, چلو 3 نہیں, ان پاکستان مور لائک 5 بجے, بٹ لائک ان انگلینڈ فار انسٹنس ویئر آئی ایم فرام 3:30 یوزڈ ٹو بی سن سیٹ. سو وین وی کیم ہوم, ہم جاتے بھی کام پہ اندھیرے میں تھے, آتے بھی کام سے منہ اندھیرے میں تھے, تو اس میں کیسے کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ اس میں تو آپ مزریبل ہوں گے ہی ہوں گے. بٹ یو ڈونٹ ریئلائز دیٹ اٹ کین سم ٹائمز کراس دیٹ سلائٹ ڈپریشن ٹو اے ڈفرنٹ لیول. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا ڈیبلیٹنگ موڈ پرابلم ہوتا ہے کہ دے کانٹ فنکشن. تو جیسے آپ اور میں تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے, ویل موو آن, ویل گیٹ آن ود اٹ, اپنا کام کریں گے, اپنا نوکری کریں گے. لیکن اگر یہ اس پوائنٹ تک چلا جائے کہ اٹ افیکٹس یور ڈیلی لائف, تو آپ کام نہیں کر پا رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جا پا رہے ہیں, کوئی آپ کو بلا لے شام کو 7 بجے تو آپ کو موت آ جاتی ہے کہ ویسے واقعی آ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے دیکھیں ہم ہنسی مذاق میں تو obviously ایک لائٹر نوٹ پہ ڈسکشن بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ڈپریشن صرف ایک بہت بدترین قسم کا ڈس آرڈر ہے جس کے بارے میں بات کرنا ویسے ہی بڑا ضروری ہے. سردیوں میں جن لوگوں کو آلریڈی ڈپریشن ہوتا ہے وہ کتنا ٹریگر کرتا ہے؟ اچھا, and the best reason is I want to leave with a message of hope. So the reason why I want to talk about is کہ this is actually something which is completely treatable. ہم اس کو فکس کر سکتے ہیں. So we have different options. So some are like obviously your therapeutic options. So you have your medication. So I'll go in reverse. Medication everybody knows about. Go see your doctor, see your medical physician, your GP, and talk to them about it. Then at Maroof International we have really amazing psychologists. So go meet psychologists. Talk to them about some therapies. So therapies لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے میں پاگل تھوڑی ہوں, میں کیوں جا کے کسی سے بات کروں. حالانکہ بڑی اویئرنیس ہے. ایک کالر بھی ہے روبیہ معظم ہمارے ساتھ. السلام علیکم معظم, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام, دس از معظم. شیخ بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر معظم, جتنی آپ کی انرجی ہے آپ کو نہیں ہوگا یہ, آپ بالکل آپ کی انرجیز لو نہیں ہو سکتی اس موسم میں. نہیں ایکچولی میں ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا اور یہ بس میرا اس پہ کامنٹ ہے جی. ماشاءاللہ بڑا ہائی لائٹ کیا انہوں نے, لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں جن کو آئی تھنک سو کہ سائیکولوجیکلی ہم نے شاید تھوڑا سا ایگزاجریٹ کر دیا ہے, کیونکہ وٹ آئی تھنک کہ سردیوں کی شاموں میں غم زدہ ہونے کا اپنا ہی ایک لطف ہے, اور کچھ لوگ بڑا اس کو محظوظ ہو کے, جیسے 100% جو فیمیل ہے بات کر رہی تھی, شاعری کرتے ہیں, ان کا ٹیلنٹ ابھرتا ہے.
तो अगर सब कुछ हम इसमें डाल देंगे कि आप बीमार हैं, तो आई थिंक ये उनके जो इंट्रिंसिक टैलेंट चले इस पर कमेंट लेते हैं। वैसे आप जैसी लॉजिक हर किसी के पास हो तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो कोई बीमारी में डिप्रेशन का तो नाम ही नहीं रहेगा इस पूरी, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे मेरा ख्याल है उन्होंने शायरों की तर्जुमानी किया है कि शायरों को इससे निकाल दे, उनको शायरी इसी मौसम में आती है। Totally enjoy it. It is definitely a very romantic season. I agree with that. And for a hot country, हम लोग जो साल में 6 महीने सर्द होते हैं सख्त गर्मी में, for us this is a real blessing. I totally agree with you. I love winters as well. लेकिन इसका बड़ा क्लियर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है. सो जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा सा लो मूड हो रहा है या मेरा थोड़ा सा घर से निकल या मैं लेजी हो रही हूँ, दैट डजंट मीन कि आई हैव गॉट सैड. सो उसका एक बड़ा क्लियर क्राइटेरिया, यू हैव दी सिम्टम्स रिकरेंटली ईयर ऑन ईयर. तो हर साल आपको इसी मौसम में आगे आप बाकी, और दूसरा सेकंड पार्ट जो है, रेस्ट ऑफ द ईयर यू आर परफेक्टली फाइन. तो वो पेशेंट्स आके हमें ये बताते हैं कि आई एम फाइन, मुझे कोई बीमारी नहीं है. रूबिया, वो लोग जो कहते हैं या तवातुर से इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं कि आई हेट विंटर्स, इसका मतलब है कोई चक्कर है. हमारे दरमियान एक शख्सियत है जो जुमले का इस्तेमाल करती है. नो आई लव विंटर. जी जी, मतलब जैसे बारिश थोड़ी सी विंटर में ऑब्वियसली ठंड की वजह से थोड़ी वो लगती है. Come on, मैं क्यों justify कर रही हूँ? No, and sun is really important because देखिए ना, if you think about it, हम कितने 600 million years से sun से अपनी एनर्जी ले रहे हैं, plants ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, सब ले रहे हैं. So the problem is actually the lack of sun. तो आप मौसम प्लीज सर्दी enjoy करें, आप वो सारी रोमांटिक शाम में enjoy करें, coffee शॉफी like you said, everything's perfectly fine. But get a light lamp. So people who are struggling from this, although nice, so I am from England, so I believe in nice guidance. लेकिन nice guidance कहती है light lamps इतना help नहीं करते. लेकिन there is lots of research done and lots of anecdotal evidence जहाँ patients बहुत खुश हैं. तो ये एक specific type of lamp होता है जिसकी बहुत high level की sort of light होती है. तो घर में लगा के रखते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स भी ऊपर रहते हैं. एक और कॉलर है ज़िया. ज़िया, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ज़िया, आपका विंटर सीजन कैसा गुजरता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक होता है. एक्चुअली मैं रूटीन जो है ना उसके साथ अपनी एडजस्ट करता हूँ. फॉर एग्जांपल जो अपनी एक्टिविटीज है ना, वो विंटर के हिसाब से, लाइक समर में थोड़ी एक्सर्शन बंदा नहीं कर सकता, विंटर सीजन में आपको थोड़ा वेदर बेहतर हो जाता है तो यू कैन वॉक अराउंड, एक्सर्ट कर सकते हैं, जिम या एक्सेट्रा. इस तरह तो जितना अपने आप को बिजी रखे, मैंने ये फील किया कि आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग्स है ना वो कम हो जाती हैं. अच्छा, देखिए ये सॉल्यूशन की बात करें. No, this is beautiful. Took the words out of my mouth. Was this Saad? Zia, you're a genius. I wish all my patients thought like you because this is literally hitting the nail on it. तो आपको अपने आप को slightly more active रखना है to counter all of these issues. Busy रखना है, healthy activities. Exactly. And exercise is brilliant. और winter months में हमें सबसे बड़ा advantage ये like he said कि गर्मी नहीं उतनी होती तो हम ज़्यादा exert कर सकते हैं, ज़्यादा aggressive workouts कर सकते हैं, बाहर खेल सकते हैं. So play sports. Play sports with your kids. Play football with your kids and see that how unfit you are. अच्छा, अब उनको नहीं था डिप्रेशन, अब हो जाएगा. ये देख के क्या पता फिट हो. नहीं नहीं होगा. He'll be fine. He'll be fine. अच्छा, वैसे अभी तक दोनों कॉलर्स जो हैं वो काफी एक को शायरी से ज़ाहिर है वो शायरों को रिप्रेजेंट कर रहे थे. बड़ी अच्छी उन्होंने भी बात की. और एग्जैक्टली अब जरा उस लैंप पे ना आए कि वो लैंप किस को चाहिए. So basically, अब इसका मतलब नहीं आप जाके सारे पागल हो जाए और वो लैम्प ढूंढना शुरू कर दें, लेकिन ये कि सन इज द की. सो यू नीड एन एग्रेसिव अमाउंट ऑफ लाइट. तो अगर आप वो भी नहीं खरीद पाते तो आप दिन के टाइम पे अपना, अगर आपका ऑफिस है तो ऐसे करें कि जैसे विंडो के पास हो, सो यू हैव सनलाइट कमिंग इन. सो लाइक यू गाइस एंड मी फॉर एग्जांपल, वी आर इन लाइक गार. तो वो डिफरेंट स्टोरी है तकरीबन जी. तो जब आप बाहर जाएं तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा डायरेक्ट सन एक्सपोजर लें. So even if you can try and get about 30 to 45 minutes of sun in the day, that's quite useful. इसका मतलब सभी ने कि ऑफिस के बाद, यानी स्पेशली अपने शो का जो मीटिंग हम करते हैं वो मैं आउटडोर्स किसी सूरज के सामने बैठ, साथ में मतलब खाना पीना भी जाहिर है साथ हो, ज्यादा बड़ा जरूरी है. मैसेज कन्वे. अच्छा डॉक्टर साहब ऐसी पर्सनल बात आ जाती है बीच में. डॉक्टर साहब जगह का भी काफी फर्क पड़ता है. लाइक जिस तरह अगर शहरों में आप रह रहे होते हैं तो हलचल थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये एक तासुर है कि शायद ज्यादा लोगों को डिप्रेशन नहीं होता सर्दियों में. और अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो खामोशी ज्यादा हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो वो लोग ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, दैट इज ट्रू. आई मीन लाइक लुक एट, I always compare us. मैं हमेशा like to say that the grass is always greener with us, not the opposite side. तो आप सोचें places like Greenland, places like Iceland, they don't get any sun for months on end. तो ये मतलब अल्लाह में एक निज़ाम है. Every area has their own special unique things, which is amazing and it's fun to enjoy them. लेकिन the good thing is कि हम माशाल्लाह बहुत blessed हैं. We have a lot of sun in summers and in winters. And the thing is कि जो winters का हमारा जो charm है, you know those
foggy. I would like to say foggy rather than smoggy, but those foggy nights and all of those things, we should enjoy them as well. लेकिन अगर आप बाहर के ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे built-up area कम है, so I agree with you, there's a bit of quietness, but some people crave that quietness. हाँ, एक और कॉलर है जी, एजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम, एजाज साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, ये मैडम से पूछ रहा था, ये जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, इसके बारे में ये क्या कहेंगी? छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, ये तो आधे पाकिस्तान का वैसे मसला है, लेकिन चले नहीं, ये आपने सर आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रेज किया. इट्स क्वाइट सीरियस एंड आई वांट टू राइट अबाउट दिस एंड टॉक अबाउट दिस एज वेल, बट वी कैन टॉक फॉर months even about this. Anger is a real issue. उसके multiple factors and some multifactorial things. So कुछ personality traits होते हैं. अब जैसे I'm the kind of person, कुछ आ जाए तो वट्टा मार दो, लड़ लो, मर लो kind of like. And some people are really mellow and calm. लेकिन there are also environmental pressures. तो I will never say कि आप अपने आप को blame करें. आप अपने इर्द-गिर्द देखें, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते. So things that you can't modify. But I wouldn't dwell on them. आप वो चेंज करने की कोशिश करें जो चीज़ें आपको अर्क कर रही हैं, जो आप चेंज कर सकते हैं. Okay. So if there are certain things, some very small example I'll quickly explain. So like tight shoes. A lot of people don't realize, women especially, because they like to wear fashionable shoes. अगर आपका जूता तंग है, आपका दिन miserable गुजरता है. So this is just a very tiny example of what I'm giving you. वैसे आपने heels पहनी हो तो वैसे exactly. अच्छा, तभी वो ख़वातीन अक्सर heels पकड़ लेती हैं हाथ में, बस नहीं मारने के लिए नहीं, वैसे पकड़ लेती हैं हाथ में. नहीं सर, the point what I'm trying to make is कि जो modifiable factors है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कोई चीज़ आपको बग कर रही है, make a list of things that you can change and a list of things that you can't change. The things that you can't change, उसका तो फिर वही है. एक हमारे पास एक और बहुत positive चीज़ है, my dad used to say कि हमारे अल्लाह मियाँ is a really big thing, so we have hope. With religion comes hope. Yes. So if there are things that you can't change, you don't say I can't change it and that's it, my life is over. You say that I can't change it, but you know what, Allah खैर करेगा. तो वो होपफुल रहना वो बड़ा जरूरी stay positive. ठीक है जी, मौसम को एंजॉय करें, स्टे पॉजिटिव. और अगर आपको लगता है कि आपको सैड है, आप सैड एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज करें, खुद वर्कआउट करें. और अगर नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें. प्रोफेशनल हेल्प, वो जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो आपकी हेल्प के लिए ही बैठे हुए, तो थेरेपी लेने में कोई भी बुराई नहीं है. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए.